my dear educators. This is Meenakshi Nirula, founder and CEO at Mentoring the Mentors, an institute that accelerates your learning curve. At our platform, it's our initiative to share with you wonderful pedagogies so that you can foster competency-based education in your students and you can foster inculcation of 21st century skills in your children, in the learners of today. So today we're going to talk about Be Internet Awesome program that has been launched in collaboration with Google as well as Mahatattva. So we're going to talk about how we can inculcate such kinds of strategies in our students, such kinds of values and skills in our students so that they all will become internet awesome. And so we are. So let us begin with you, my dear educators. Be Internet Awesome program. Today, I'm going to give you a glimpse of it. This program, as I've already shared with you, will be on both the modes, synchronous as well as asynchronous. This video that I am going to share with you, you can watch it at your own pace. And we are going to have some synchronous mode videos also where you will be able to ask any questions that are there in your mind. We will be bilingual in our conversation ताकि हमारे सारे जो टीचर हैं, सारे शिक्षक, हमारी फैकल्टी मेंबर्स, all of them, they will be able to understand. हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में बात करेंगे ताकि उनके मन में भी जो क्वेरीज हैं वो खुल के बात कर सकें. Everybody has to be internet awesome. इसमें लैंग्वेज का कोई रोल नहीं है. हमें इंटरनेट ऑसम होना है. वी शुड नो अबाउट डिफरेंट टेक्निक्स ताकि हम इंटरनेट को इफेक्टिवली एफिशिएंटली यूज कर पाए. साइबर सिक्योरिटी, साइबर सेफ्टी हमें पता हो, हम अपने बच्चों को उस चीज के लिए अवेयर कर पाए. राइट. सो हम इसके बारे में बात करेंगे. और इसके अलावा मैं ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ प्रोग्राम बता दिया और आपको ये बोल दिया कि आप अभी 100 स्टूडेंट्स को जाइए, उनको सिखाइए और उसके बाद में आप सर्टिफिकेट आपको मिलेगा. आपको हर एक मॉड्यूल जो आपको स्टूडेंट्स को पढ़ाना है वो भी एक्सप्लेन किया जाएगा एट ओनली एंड ओनली मेंटरिंग द मेंटोर्स. हाथ पकड़ते तो छोड़ते नहीं है फिर, राइट, टिल यू रीच योर गोल. सो टुडे वी गोना डिस्कस अबाउट दैट. सो हियर यू गो. So, my lovely educators, this is Be Internet Awesome program launched by CBSE and Google in partnership with each other. So, हम इसके बारे में जानेंगे कि हमें इसमें क्या क्या करना है, हम इसमें क्या क्या कर सकते हैं, what we have to do, कैसे हम all internet awesome बन सकते हैं, right? So, like this is the email ID BIA Be Internet Awesome support@mahatattva.in. अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, डिफिकल्टी है, कुछ कंफ्यूजन है, you can approach them also at this email ID, and office hours have been mentioned over there. If you want to log in on any kind of meet program, they have already launched. पहले उन्होंने हमारे साथ लिंक शेयर किया था कि आप 4 से 5 बजे के बीच में आपके पास कुछ क्वेरीज हैं तो मीट लिंक के थ्रू you will be able to discuss. Okay, so you can share your queries if you have in the comment section as well, so that we will help you reach Mahatattva. And there are you see their channel as well. You can check their recorded videos on YouTube channel as well. और इस में जब बात होती है, आई गेस मोस्ट ऑफ यू मस्ट हैव यूज्ड पियर डेक. पियर डेक आप में से बहुत सारे टीचर्स ने यूज किया होगा ड्यूरिंग दिस पेंडेमिक टाइम व्हाइल टेकिंग ऑनलाइन क्लासेस. पियर डेक एक इंटरैक्टिव टूल है जो आप गूगल स्लाइड्स के साथ, पावर पॉइंट के साथ, किसी के साथ भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये जो कोलैबोरेशन है गूगल और महातत्वा है, तो हम गूगल स्लाइड्स के बारे में बात कर रहे हैं कि यू विल बी एबल टू यूज द सेम लाइक पियर डेक को कोलैबोरेशन के साथ गूगल स्लाइड्स के साथ यूज करते हैं. स्लाइड्स इंटरैक्टिव हो जाती है स्टूडेंट्स के साथ. आप टाइम बाउंड के अकॉर्डिंगली, टाइम के अकॉर्डिंगली यू विल बी एबल टू शेयर सम क्वेश्चंस विद देम सो दैट दे विल बी एबल टू आंसर एंड रिप्लाई. इंटरैक्टिव कम्युनिकेशन होता है, राइट. सो लाइक इसके बारे में ये मतलब इट्स नॉट मैंडेटरी कि आपको पियर डेक आना चाहिए तभी आप इंटरनेट ऑसम हो सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, बट यू कैन use it to make your classes interactive and effective, right? So now here you go. Digital इसमें जो बात हो रही है इन सब पॉइंट्स की, सबसे पहले है शेयर विद केयर. शेयर विद केयर में बात करते हैं डिजिटल फुटप्रिंट की एंड रिस्पॉन्सिबल कम्युनिकेशन. हम जब भी कम्युनिकेट कर रहे हैं, कम्युनिकेट करने के कितने
वेज हैं, हम ईमेल के थ्रू करते हैं, हम सोशल मीडिया में डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं हमारे पास, हम उनके थ्रू कम्युनिकेट करते हैं. So we have to be responsible in our communication. We have to take onus and responsibility of what we are sharing on any kind of media, be it WhatsApp, be it Telegram, be it any kind of app that we are using. We have to take the onus and responsibility for that. And हमें ये भी देखना है कि जो हम शेयर कर रहे हैं, जो भी इंटरनेट पर चीज शेयर करी जाती है, इट लीव्स इट्स फुटप्रिंट्स. वो आप सोचो आपने डिलीट कर दी है, नो, इट नेवर वैनिशेस. इट हैज इट्स डिजिटल फुटप्रिंट्स ओवर देयर. सो मेक श्योर, थिंक बिफोर यू शेयर, थिंक बिफोर यू शेयर, राइट? पहले हम कहते थे थिंक बिफोर यू स्पीक, राइट? नाउ वी से थिंक बिफोर यू शेयर. डोंट फॉल फॉर फेक फिशिंग स्कैम्स एंड क्रेडिबल सोर्सेस. लेट मी टेल यू, इंटरनेट पर हम, जैसे मैंने एक स्ट्रैटेजी शेयर किया था, ब्यूटी एंड ट्रूथ, उसमें जब हम बात करते हैं कि बहुत सारी चीजें लुभावने वाली हमें फेसबुक पर, इंटरनेट पर, कहीं पर भी, किसी भी प्लेटफॉर्म, आई एम नॉट ओनली टॉकिंग अबाउट सी कि मैं फेसबुक का नाम ले रही हूँ, तो मतलब कोई भी सोशल मीडिया जो हमारा है, जो हम बहुत यूज करते हैं, उसके ऊपर कई बार हमें ऐसी इंफॉर्मेशन मिलती है, हमेशा देख कर ही हम उसमें ब्यूटी, मतलब वो जो अट्रैक्टिव पार्ट है, हम सिर्फ उसको देखते हैं. ट्रूथ, सच्चाई क्या है, वेदर इट इज रेलेवेंट, वेदर इट इज फ्रॉम क्रेडिबल सोर्सेज और नॉट, वो हम नहीं देखते. तो हमें क्या करना है, उससे बच के रहना है, समझदारी से यूज करना है. डोंट फॉल फॉर फेक. फॉर दैट यू मे कंडक्ट ब्यूटी एंड ट्रूथ एक्टिविटी एज वेल इन योर क्लासेस विद योर स्टूडेंट्स, राइट? Now, secure your secrets, online security and passwords. Passwords, make sure you keep on changing them frequently and write them at appropriate place. और passwords should not be like that easy to be guessed. easily guess करने वाले नहीं होने चाहिए. मैंने एक बार नहीं, मतलब number of times I have attended workshop sessions by Dr. Rakshit Tandon, right? तो साइबर के बारे में, उनसे ज्यादा साइबर सिक्योरिटी में बारे में जानकारी किसी को नहीं है, राइट? सो एंड ही हैज शेयर्ड नंबर ऑफ थिंग्स विद अस. विमेन स्टे के ऊपर के कितने और सेशंस ऑर्गेनाइज करते हैं टू मेक अस अवेयर, बिकॉज आजकल हम देखो कितनी ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, क्या है, और जो टेक से भी इतनी नहीं है तो भी हम सोचते हैं कि चलो क्विकली ऑनलाइन पे शॉपिंग कर लेते हैं, घर बैठे बैठे सामान आ जाता है. बाहर तो सड़कों की हालत ऐसी है, बाहर जाने की भी हालत नहीं है. सो उस सिनेरियो में एवरीबडी हैज टू बी इंटरनेट टेक सेवी. ये मत सोचो आप सब जो देख रहे हो कि शायद टीचर्स के लिए, बच्चों के लिए, इवन द होम मेकर्स एज वेल, किसी के लिए भी, वट एवर यू डू, सबके पास मोबाइल है, सबके पास इंटरनेट फैसिलिटी है. तो आपको अपनी सिक्योरिटी सेफ्टी का ध्यान रखना है. पासवर्ड्स जो हैं वो बहुत ही ऐसे इजीली गेस करने वाले नहीं होने चाहिए, राइट? सो आई मीन टू से, ऐसा होना चाहिए कि वो आप ही को पता हो, राइट? उसको कहीं नोट करके रखिए सेफ जगह पर. तो एंड कीप ऑन चेंजिंग देम फ्रीक्वेंटली. ऐसा नहीं है कि आप 15 वेबसाइट्स खोल रहे हैं, 15 के 15 का ईमेल का, वेबसाइट्स का, और कहीं ना कहीं आपके बैंक अकाउंट्स का सेम पासवर्ड की हम भूल जाते हैं, चलो एक ही पासवर्ड रख देते हैं. इट शुड नॉट हैपन, राइट? सो नाउ इट्स कूल टू बी काइंड, कॉम्बैटिंग नेगेटिव ऑनलाइन बिहेवियर. नेटिकेट्स के बारे में बच्चों से बात करें कि जब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर है, हमें कौन कौन से पॉइंट्स का ध्यान रखना है. ऑनलाइन बिहेवियर इज लाइक वेरी इंपॉर्टेंट टू बी लर्न करना पड़ता है. हर चीज तो आती नहीं है. क्लासरूम में हम क्लासरूम के एटिकेट्स, एसेंशियल एग्रीमेंट्स डिस्प्ले करते हैं कि क्लासरूम में क्या क्या रूल्स होने चाहिए, क्या अग्रीमेंट होने चाहिए. हम टुगेदर उसको बनाते हैं एग्रीमेंट्स को, एसेंशियल एग्रीमेंट्स पर हम उसको फॉलो करते हैं, सो दैट वी शुड हैव अ वंडरफुल क्लासरूम, राइट? सो यहाँ पर जब बात हो रही है कि कॉम्बैटिंग नेगेटिव ऑनलाइन बिहेवियर पर जो हमारे पास नेगेटिव, चाहे हम बिहेव करें चाहे दूसरे हमारे साथ बिहेव करें, उसको डील कैसे करना है, इसके बारे में बात करनी है. व्हेन इन डाउट टॉक इट आउट. मैं हमेशा सबसे ये शेयर कर कहती हूँ, नेवर एज्यूम, ऑलवेज आस्क, राइट? नेवर एज्यूम, ऑलवेज आस्क. सो हमेशा अपने आप नहीं एज्यूम करें, मुझे ऐसा लगा, मैंने ऐसा किया, आई थॉट लाइक दैट, आई मीन मुझे ऐसा समझा, मैंने, मुझे ऐसा लगा, मैं ऐसे कर लूं, मैंने ऐसा कर लिया. नो, if you have any questions, make sure you ask. So that's why it's written, when in doubt, talk it out. पूछिए, बात करिए जब आपको डाउट है. अपने आप कुछ assume मत करिए. questionable content and scenarios में आपको बात करनी होगी. Make sure you talk to the concerned person, reliable authorities. You have to approach them. Now, here you go.
what kind of students we want, what kind of children we want. Like they have to be internet awesome. Awesome kaise banenge? Smart, alert, strong, kind and brave, and all the details have been mentioned here. Sab padhenge ek ek karke. Smart, helping students understand that what their post can be forwarded and copied, found, is crucial to staying safe online. Teach students how to recognize and steer clear of potentially embarrassing or even dangerous situations that could have lasting consequences. कुछ भी शेयर करना है, you have to be very very smart. उसमें देखना है कि आप जो चीज शेयर कर रहे हैं, whether it is authentic or not, whether it is reliable or not. राइट, थिंक बिफोर यू शेयर, ये आपको हमेशा याद रखना है, बच्चों को समझाना है। ऐसे ही कोई चीज आई है कहीं से, बिना सोचे समझे फॉरवर्ड नहीं करना है। हमारे पास व्हाट्सएप पर भी अब कितने चीजें आती हैं, फॉरवर्डेड मेनी टाइम्स लिख कर आता है, राइट। और उसको हम एक से ज्यादा को एक बार में भेज नहीं सकते हैं, बिकॉज पहले क्या होता था, किसी के पास गुड मॉर्निंग का भी मैसेज आया, फॉरवर्डेड टू 50 अकाउंट, सुबह सुबह सबको सेम, कोई चीज आया सेम। इट शुड नॉट बी लाइक दैट। प्लीज 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 थिंक बिफोर यू शेयर। Now, alert, many details that raise red flags for adults can be overlooked by children. Help them learn what they are, what to look for, and how to trust their gut when they encounter suspicious or possibly harmful emails, websites, and apps. सारे स्टूडेंट्स, टीचर्स, हम टीचर स्टूडेंट बिकॉज की बात कर रही हूँ, बाकी तो सभी उसमें सभी आते हैं, ऑफिशियल्स, डिफरेंट प्रोफेशनल्स, एवरीबडी यूजेस ईमेल। जैसे ही हम स्मार्टफोन एक खरीदते हैं, चाहे आप कहीं जॉब कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, होम मेकर हो, तो आपको क्या लॉग इन करना पड़ता है, एक ईमेल आईडी बना के आपको लॉग इन करना पड़ता है। हमें याद भी नहीं रहता, कई बार तो वो दुकान वाले से मोबाइल लेते हैं, उसी को बोलते थे भैया तुम ही बना दो इसकी ईमेल आईडी जो बनानी है। सारा ईमेल आईडी पासवर्ड उसको पहले का पहले दे देते हैं, उसके बाद जो कुछ करते हैं, एवरीथिंग इज बीइंग असेस्ड बाय दैट पर्सन, उसके लिए सोचते भी नहीं है। तो ईमेल जब हमारे पास आती है, उसको देखें, वार्निंग के सिंबल के साथ आती है, उसमें रेड फ्लैग्स लगे होते हैं, वार्निंग होती है, डू नॉट ओपन दोज ईमेल्स, राइट, delete them, just delete them without opening it, right। और अपने ऐसे ईमेल पासवर्ड किसी भैया से, दुकान वाले से जिससे मोबाइल लेना, उससे नहीं बनाना, do it yourself, right। लैपटॉप भी नया खरीदेंगे, उसके लिए भी बोल देंगे तुम ही बना दो, कहते हैं हम इसकी पार्टीशन कर दें, हम इसका ईमेल आईडी बना दें, लॉगिन कर दें, ऑफिस इंस्टॉल कर दें, वो खुद ही ईमेल आईडी बना के पासवर्ड खुद ही कर दो, एंड फॉर हमेशा के लिए यू मेक गिव देम दैट काइंड ऑफ आई मीन एक्सेस टू योर डिवाइस। वो नहीं होना चाहिए। We have to be very, very careful. Now, if I talk about strong, help your students understand that privacy is more than just what they choose to share or not share online. This lesson helps students understand what information should be private and safeguarded and what they need to do to keep it away that way. बच्चों से ये कि उनको सिर्फ प्रिवेसी का मतलब ये नहीं कि हमने शेयर किया या नहीं शेयर किया है, इसका मतलब है जो शेयर कर रहे हैं उसके लिए भी कितनी आपकी प्रिवेसी की सेटिंग होती है। फेसबुक के ऊपर आप एक सेफगार्ड करते हो, लॉक स्क्रीन करते हो, ताकि एवरीबडी जो आपके फ्रेंड्स नहीं है, दे विल नॉट बी एबल टू गो थ्रू योर प्रोफाइल। उसमें भी आप हर पोस्ट के लिए, जरूरी तो नहीं आपको हर पोस्ट पब्लिक ही डालना है, कुछ फ्रेंड्स को शेयर करते हैं, कुछ एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक पीपल को आप शेयर करते हैं। मेक श्योर यू थिंक बिफोर यू शेयर कि आप किसके साथ शेयर कर रहे हो, आप क्या शेयर कर रहे हो। उसके लिए आपके माइंड में ये होना चाहिए। डिजिटल फुटप्रिंट्स की जब बात होती है, वो आप नेट पर कोई भी चीज शेयर करते हो, इट नेवर वैनिशेस, हमेशा के लिए उसके फुटप्रिंट्स रह जाते हैं, right? So now the golden rule is just as important online as it is IRL. The internet can be a truly great place to learn when comments, conversations, content are positive. Help students see how to make choices that disempower bullying behavior and create healthy, productive spaces to interact. जब भी आप देखिए YouTube के किसी भी वीडियो के ऊपर जब आप कमेंट करेंगे, मेरे वीडियो के ऊपर जब आप कमेंट करेंगे, राइट, सो उसमें एक ऑप्शन आती है, मेक श्योर कि आप जो रूल्स हैं उसके अकॉर्डिंगली आप कमेंट करें। इट शुड बी हेल्दी, इट शुड बी पॉजिटिव, राइट। किसी की इमेज को ह्यूमिलेट करने वाला कमेंट हम नहीं लिखेंगे। You have to be very, very positive and sophisticated. Don't reveal any kind of private information on such kinds of websites, right?
और अगर आपका कोई सपोर्ट कर रहा है, हेल्प कर रहा है, बहुत सारे मैंने ऐसे चैनल्स देखे हैं जिनके ऊपर लोग कुछ भी कमेंट करते रहते हैं। आई मीन एक किसी पर्सन ने पर्टिकुलर इनिशिएटिव लिया आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर करने का, एंड यू जस्ट स्टार्ट ह्यूमिलेटिंग, कुछ भी लिखना शुरू कर देते, कोई अपने लिंक्स दैट आर रियली नॉट अप्रोप्रिएट वो भी शेयर करना शुरू कर देते। इट शुड नॉट हैपन, राइट? तो हमें ये बच्चों को सिखाना है। नाउ reinforce lessons that parents and educators have taught from early childhood. When children come across something questionable, they should feel comfortable talking to a trusted adult. Adults can support this behavior by fostering open communication at home and in the classroom. हमेशा हम बच्चों को क्या बोलते हैं? फ्रेंडली रहिए, आप अपने पेरेंट्स के साथ बात शेयर करिए, छुपाने की बात नहीं है। यू शुड टॉक, नेवर एज्यूम, ऑलवेज आस्क। बात करिए, जहां पे आपको कुछ कंफ्यूजन है, मेक श्योर यू ट्रस्ट, राइट? सो जिस पे आप ट्रस्ट करते हो उससे बात करिए, उससे डिस्कस करिए। यूजली जो लुभावने वाले कुछ एड्स आते हैं, कुछ है कि हम सोचे कि हमारे पेरेंट्स शायद डिनाई कर देंगे, दे वोंट अग्री, हम उनके पीछे चले जाए, चलो इनको बताएं नहीं। इट शुड नॉट हैपन। लेट मी टेल यू, मेरे साथ भी बहुत सारे पेरेंट्स व्हेन दे कम टू मी कि ऑनलाइन जब क्लासेस हुई थी, हमारे बच्चों ने जी ऑनलाइन क्लास हम नहीं करने देंगे। व्हाई? बिकॉज मेरे अकाउंट से इतने पैसे चले गए, उतने पैसे चले गए, गेम खरीद ली, कुछ हो गया। तो व्हाई हैव यू शेयर्ड, आई मीन सच काइंड ऑफ पासवर्ड ऑटो सेव जब हम मोबाइल में कर देते हैं, तो फिर वो बच्चों ने खरीद लिया उससे गेम्स एंड ऑल। तो वी नीड टू सिक्योर पासवर्ड्स को फ्रिक्वेंटली चेंज करें, और उसको ऑटो सेव हर जगह पर करने की जरूरत नहीं है। टेक पेन एंड पेपर डायरी, keep it at a safe and secure place, right? So now next we're gonna talk about module number 1, be internet smart, share with care. Be internet smart, share with care. Think closely about sharing information with others. Be thoughtful. Understand the consequences that come along with sharing. पहले सोचिए कि मैं शेयर करूंगा, मैं शेयर करूंगी, इसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। कीप एक्स्ट्रा सेंसिटिव इंफॉर्मेशन टू योरसेल्फ। कोई जरूरत ही नहीं शेयर करने की। द इंटरनेट कनेक्ट्स यू टू द वर्ल्ड थ्रू मैसेजेस, फोटोज, कॉन्वर्सेशंस। यही होता है। मैसेंजर पर चैट करते हैं, इंस्टा पर पिक्चर्स शेयर करते हैं, फेसबुक पर पिक्चर्स, वीडियोस, मैसेंजर, आई मीन वी टॉक अबाउट दैट, ट्वीट करते हैं। लिंक्डइन पर ऑफिशियल है, प्रोफेशनल, ठीक है, उसको प्रोफेशनली यूज करें। और नंबर ऑफ अनदर प्लेटफॉर्म्स आर देयर। ये तो मैंने कुछ 2-4 कॉमन जो यूज करती हूँ मैं वो वाले शेयर करें, बट देयर आर नंबर ऑफ अदर प्लेटफॉर्म्स। टम्बलर है, रेडिट है, ABCD, अपने कितने सारे A to Z हैं, हमें पता भी नहीं है, बट पीपल दे कीप ऑन यूजिंग नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म्स। आज के बच्चे बहुत स्मार्ट है, वो नई नई चीजें, हाँ ठीक है, मम्मी फेसबुक पर आ गई, चलो इंस्टा पर चलते हैं, मम्मी इंस्टा पर आ गई, चलो टम्बलर पर चलते हैं। रेडिट का तो मम्मी को पता ही नहीं है, वी विल बी यूजिंग लाइक दैट। आई मीन चिल्ड्रन आर वेरी स्मार्ट। सो आई मीन उनको समझाना है, बेटे आप आपको सारी थोड़ा ना पता चलेगी इन्फॉर्मेशन की बच्चे कौन से प्लेटफॉर्म पर हैं अभी। तो मेक श्योर आप उनको समझाइए कि यू हैव टू कीप एक्स्ट्रा सेंसिटिव इंफॉर्मेशन टू योरसेल्फ ओनली, नो नीड टू शेयर इट विद द वर्ल्ड. The internet connects you to the world through messages, photos, conversations, and these connections are called digital footprint that others can see. It's extra important to be careful about what you share online and who you share it with. Remember, if you are ever not sure about what to share, talk it out. Talk it out. Ask, never assume, right? With a trusted adult, right? So this you need to discuss with your students. And goals for the students: create and manage positive reputation both online and offline, right? Respect the privacy boundaries of others, even if different from one's own. हर एक की अपनी privacy है, मेरी अपनी setting है, आप लोगों की अपनी setting है, right? वो उसके accordingly हमारी जो जो बाउंड्रीज हैं, तो उनकी बाउंड्रीज को रिस्पेक्ट करें। उनको ये नहीं कि ओ तुमने तो अपने इतने प्रिवेसी, इतने वो चीज लगा रखी है, प्रोफाइल को लॉक किया हुआ है, तो दैट इज हिज और हर ओन सेटिंग। प्लीज मेक श्योर यू रिस्पेक्ट. Now, understand the potential impact of a mismanaged digital footprint. कभी ऐसा डिजिटल फुटप्रिंट, आई मीन टू से, कोई चीज आपने ऐसी शेयर कर दी इंटरनेट पर, और उसके बाद यू शुड अंडरस्टैंड कि उसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, कहाँ तक वो चीज यूज हो सकती है. सो वी हैव टू बी वेरी वेरी अलर्ट एंड अटेंटिव.
Ask for adult help when dealing with sticky situations, right? Now, scenario, let's talk about this case study. The children at your house take turns using your mom's tablet. ऐसा ही होता है ना, बच्चों को खेलना है, मम्मी के पास tablet है, मोबाइल है, क्या है, तो बारी बारी siblings तो हैं, वो use करते हैं. So everybody knows the passcode, सबको पता है. Your whole family also has one account for doing online shopping. ऐसा ही होता है, 10 account तो नहीं बनाएंगे ना, एक ही है, Amazon का account बनाएंगे, Blinkit का बनाएंगे, Swiggy का बनाएंगे, जो भी है, तो कुछ भी बनाना तो एक आपने उसका एक अकाउंट बनाया हुआ है. And that was all fine until one day your brother had a friend over and they were using your mom's tablet to look at some amazing headphones for gamers on the shopping site. And your brother went to get a snack in the kitchen. Then they went outside to shoot some hoops. And a few days later, this box arrived at your house. It had headphones in it. Your brother said he did not order them. You believe him? Your parents are going to wonder how that headset arrived at your house. What do you do? And your brother decide to do? What about the password part? Do you see a problem with everybody in the family using the same passwords for family devices and accounts? If friends can use those devices and accounts, would you talk to your family about that? Please make sure बच्चे पेरेंट्स से, आप बच्चों को भी बताएंगे, उससे डिस्कस करेंगे कि अगर उनकी फैमिली में ऐसा कुछ है कि एक ही अकाउंट बना हुआ है, बच्चे, उनके फ्रेंड्स भी आते हैं, उनको भी मोबाइल दिखाते हैं, इकट्ठे क्लास भी लगाते हैं ना, कोलैबोरेशन भी करना है हमने, तो उसमें ऐसा कोलैबोरेशन नहीं करना है कि पासवर्ड और अकाउंट डिटेल्स और सब कुछ शेयर कर दें. तो मेक श्योर आपको भी पता है, अगर सपोज हम ऐप कोई भी यूज करते हैं, नेटफ्लिक्स भी बनाया है, कुछ और हम किड्स का अकाउंट बनाते हैं, यूट्यूब किड्स पर बनाते हैं, उसमें भी डिफरेंट डिफरेंट 3 बच्चों के लिए पर अलग अलग अकाउंट भी लॉगिन बना सकते हैं. तो हमें उसके बारे में क्या करना है? आस्क, नेवर assume, right? So now this is Interland game, right? We're talking about be internet smart, be internet alert, be internet kind, be internet strong, be internet awesome. आप बच्चों को इस तरीके की कुछ गेम खिला सकते हैं जिसमें you will be able to give them such kinds of badges. ये प्रिंट कर सकते हैं कि हाँ, कौन इसमें स्मार्ट है, कौन इंटरनेट अलर्ट है, हु इज इंटरनेट काइंड. आई मीन थोड़ा सा डिस्कस करने के बाद उनको बैजेस दीजिए. बैजेस तो हमेशा ही बच्चों को इससे कितना मोटिवेट करते हैं, राइट? Now, module 2, be internet alert, don't fall fake. So, be internet alert, spot the signs of phishing and scams, know how to tell the difference between what's real and what's fake, spot the signs of potential scam. You know very well, अगर जैसे आपकी जो वेबसाइट है, जब हम नेट बैंकिंग के लिए यूज करते हैं, आपको प्रॉपर HTTP से जो भी उसका है स्लैश यूज करते हैं, कॉलन है, उसके बाद प्रॉपर वेबसाइट यूज करना है. बहुत सारी फेक वेबसाइट भी है. फॉर एग्जाम्पल चलो लेते हैं, सपोज करो किसी का बैंक अकाउंट है उसमें ICICI में, तो वो सिमिलर वेबसाइट आपको मिल जाएगी जिसमें आई थोड़ी सी आगे पीछे होगी. किसको ध्यान रहता है? हम चेक भी नहीं करते हैं, एंड वो हम रॉन्ग जो फेक वेबसाइट्स हैं उसके ऊपर हम लॉग इन कर देते हैं. तो वी हैव टू मेक श्योर कि बच्चों को इस चीज के बारे में क्लैरिटी हो. पेरेंट्स के लिए सेशन करिए, दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. यू कैन ऑर्गेनाइज पेरेंट ओरिएंटेशन प्रोग्राम रिलेटेड टू बीइंग इंटरनेट ऑसम. Phishing is when someone tries to steal information like your login, your account details by pretending to be someone you trust in an email, text, or other online communication, right? आपको बोला जाएगा, आपके पासवर्ड आएगा, प्लीज शेयर करिए, आपका जो अकाउंट है वो बंद होने वाला है, मेक श्योर आप इसका OTP अभी आएगा, हम इसको चला देंगे, नहीं तो आपका सारे पैसे चले जाएंगे, मेक श्योर आप OTP शेयर करिए. हम कई बार उनकी बातों में आ जाते हैं. इट शुड नॉट हैपन. सम फिशिंग अटैक्स आर ऑब्वियसली फेक, अदर्स कैन बी स्नीकी एंड रियली कन्विंसिंग. कई तो आपको पता चल जाएगा कि ऐसा ही है, बट कई इतने कन्विंसिंग होते हैं कि हम शेयर कर देते हैं अपनी इंफॉर्मेशन. When you are online, always be on the lookout for phishing attacks in your email, text, and posted messages. And if you do get fooled, make sure you tell an adult you trust right away. बात करिए, ask, never assume. And you control who you are in contact with online. Make sure the people you connect with are who they say they are. बहुत बार ऐसा नहीं होता, लोगों ने मखौटे जैसे पहनते हैं ना, मास्क पहन रखे होते हैं. उनकी आईडी आपको, आप बॉय हो,
आपको हो सकता है कोई बॉय ही रिक्वेस्ट भेजे एंड वो गर्ल बन के करे, आई मीन दे चेंज देयर नेम एंड अदर डिटेल्स, राइट? यू नो इट्स वेरी इजी नाउअडेज। मुझे फोन आता है मेरे ही अपने नंबर से, हाउ इट इज पॉसिबल? बहुत सारी चीजें अवेलेबल हैं। आप किसी की लोकेशन मंगाओगे, कहीं और की लोकेशन, लाइव लोकेशन भी आपको आ जाती है। कैन यू इमेजिन? सो वी हैव टू बी वेरी वेरी अलर्ट एट दिस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। अब हम सोचे कि इतना कुछ है तो चलो नहीं यूज करें, बट ऐसा नहीं है। ऑनलाइन में हमने 2 years तक वे यूज्ड दिस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, राइट? सो अभी तो वी आर फॉलोइंग अ हाइब्रिड मोड, ब्लेंडेड लर्निंग। तो इंटरनेट तो यूज करना ही है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म तो यूज करना ही है, बट सेफ्टी सिक्योरिटी का हमें ध्यान रखना है। नाउ when you ask good questions about sources and the information they provide, you will get much better information. Reliable sources को देखिए तो देखिए, your life will become awesome. So now, goals for the students, they should be able to understand that what people tell you online isn't necessarily true. Beauty and truth. Learn how scams work, why they are a threat, and how to avoid them. Determine the validity of information and messages online and be wary of manipulation, right? Unsubstantiated claims, fake offers or prizes and others online scam. कितने व्हाट्सएप ग्रुप में ही आ जाता है, इसको क्लिक करो, यू विल गेट नंबर ऑफ अवार्ड्स एंड प्राइजेस। फिर क्या होता है, ग्रुप एडमिन उनको फटाफट से डिलीट करता है उसमें से, बिकॉज वो स्कैम है, राइट? डोंट उसको क्लिक मत कर दीजिएगा कभी। कोई क्यों देगा? वाई? हमें क्यों बैठे बैठाए घर पे कोई क्यों बोलेगा कि आपकी लॉटरी निकली, आपका ये प्राइज निकला, आपका ये मिला? वाई? वाई? कोई नहीं देता है, राइट? So let's be very very attentive for that. No, here's a scenario, बच्चों के साथ डिस्कस करेंगे, and after that you can give them badges and all. A pop-up ad says, गेम खेल रहे हैं, यूट्यूब देख रहे हैं, कुछ भी काम कर रहे हैं, उस पे pop-up एक आता है. It says you are a part of a very small group that has been selected to try a special mermaid pill that will give you the power to breathe underwater without scuba gear. All you have to do is send INR 2000 to cover shipping. Would you do it? Tell children, would you do it? You like a lot of the videos by a popular vlogger because they are funny, but they also say nasty things that you don't like. Do you buy what they say because they are funny and really popular? Do you think that influences people? बच्चों से बात करिए, ask them about their views. What do they say? Now, here's a handout. बच्चों के साथ आप ये handout share कर सकते हैं. Handful steps to identify credible from non-credible sources. Step 1, use common sense. क्या वो logical है जो आप देख रहे हैं इंटरनेट के ऊपर? Ask questions. Now, what you have to do is you need to ask questions. कौन-कौन से questions? Not just any questions, but these 4. Does the source know me or care about me? Does that matter? Does this source know a lot about this topic? How did they learn what they know? इनको कैसे पता चला? What does this source want me to do or believe, or why would they want me to do or believe that? मुझे ये कह रहे हो, उनको क्या फायदा है इस चीज के लिए? मैं क्यों उनके ऊपर ट्रस्ट करूं? Who benefits? इसमें फायदा किसका है? And who might be hurt if people believe this source? किसको नुकसान होगा इसके ऊपर believe करके, right? So we need to talk about such points. Now, step 3, confirm. Do other credible sources back up what this source say? Right? हम कोई भी चीज परचेज करते हैं उसके रिव्यूज भी पढ़ते हैं, तो आप देखिए उसके लिए कि और कौन से ऐसे ऑथेंटिक वेबसाइट्स हैं, ऑथेंटिक सोर्सेज हैं जो उसको वैलिडेट कर रहे हैं. सो मेक श्योर यू टॉक अबाउट ऑल दीज स्टेप्स विद योर स्टूडेंट्स. शेयर द हैंडआउट विद योर चिल्ड्रन, डिस्कस द सेम. एंड नाउ हियर कम्स द इंटरलैंड गेम. जब आपके बच्चे उस चीज को अच्छे से समझ आए, आपको क्या करना है? उनको बैजेस देकर मोटिवेट करना है. So here you go. Now next is module 3. Be internet strong. Secure your secrets. Protect your password and private information by creating using a secure password. Take responsibility by protecting information that is very, very important to you. Create a unique and memorable password. Create a strong password by combining characters, numbers, symbols, right?
And character में भी use capital letters, use small letters, use numbers, and some kinds of special symbols. It should be a mixture of that so that it will be difficult for the other person to guess. A strong password can secure your personal information and help prevent scammers for stealing your personal information online. Students learn how to create a strong password and make sure it stays private after they create it, right? Choose a strong unique password for each of your important accounts. मैंने आपसे पहले भी शेयर किया है, different accounts है, हर एक के लिए different password होना चाहिए. ऐसा नहीं है कि एक पासवर्ड 10 वेबसाइट्स का, 10 लॉगिन क्रेडेंशियल्स का आपका सेम पासवर्ड है. It should not happen, right? So now, what are the learning goals for the students? Learn why privacy and security matter and how they relate to each other. Privacy and security एक दूसरे के साथ कैसे related है और कैसे matter करते हैं. Practice how to create strong passwords and keep them to yourself. Review the tools and settings that protect against scams, hackers, and other threats. ठीक है, आप उन टूल्स को रिव्यू करिए. आप बहुत बार एड ऑन्स यूज कर लेते हैं, नॉट फ्रॉम द रिलायबल सोर्सेस. लाइक अगर गूगल स्लाइड्स यूज कर रहे हैं आप, उसमें आप गूगल के ही आप जाके क्रोम पर जाकर आप वहां पर जब परचेस करेंगे कुछ एक्स्ट्रा एड ऑन्स हैं, वो तो दैट इज ठीक है, रिलायबल. बट आप एक्स्ट्रा अगर कोई भी एक्सटेंशंस या और कोई चीजें यूज करना शुरू कर देते अपने प्लेटफॉर्म पर, मेक श्योर इट शुड बी फ्रॉम द रिलायबल सोर्स, राइट? ऐसे कुछ भी फ्री में मिलता है तो उसको अटैच करने की, उसको परमिशन देने की जरूरत नहीं है, राइट? नाउ सिनेरियो, आई शेयर्ड माय पासवर्ड टू सोशल मीडिया अकाउंट, टैबलेट, कंप्यूटर, गेमिंग अकाउंट, स्ट्रीमिंग सर्विस, फोन. किस किस में हमने शेयर किया और वहां सेव करने के लिए हमने परमिशन दिया है. टॉक टू योर स्टूडेंट एंड हियर इज द again a handout. Guidelines for creating strong password. कैसे कर सकते हैं, उसके do's and don'ts we need to discuss the same with our students. कैसा होना चाहिए वो मैंने आपको पहले भी बताया. Combination of letters, okay, and numbers and symbols. Letters may be capital letter and small letters both, right? And now do's, use a different password for each important account. हर account के लिए different password होना चाहिए. At least should be of 8 characters. Usually तो बहुत सारी वेबसाइट पर जब हम एंटर करते हैं 8 कैरेक्टर्स से नीचे का वो पासवर्ड एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं, राइट? कॉम्बिनेशन होना चाहिए सिंबल्स का, लेटर्स का. वो आई हैव ऑलरेडी शेयर्ड विद यू. इमीडिएटली चेंज योर पासवर्ड अगर आपको लगता है कि किसी ने आपकी आईडी लॉगिन करी है. हमेशा वो एक बार डबल पासवर्ड आप सिक्योरिटी लगाएं, सिक्योर इट, ताकि आपके मोबाइल पर भी नोटिफिकेशन आए, नंबर आए, राइट? सो उसके अकॉर्डिंगली यू हैव टू यूज इट. स्ट्रॉन्ग स्क्रीन लॉक्स ऑन योर डिवाइसेस. डिवाइसेस पर स्ट्रॉन्ग लॉक होने चाहिए. सेट योर डिवाइसेस टू ऑटोमेटिकली लॉक इन केस they end up in wrong hands. And consider using a password manager such as one built into your browser to remember your passwords the way you use unique password for each of your accounts and not have to remember them all, but that should be authentic. Okay, now don'ts kya hai? Do not use personal information, your name, address, email, phone number, social security number, your मदर्स मेडन नेम, ये बहुत बार हमें ऐड करना होता है. एंड द बर्थ डेट्स, पेट्स नेम एटसेट्रा इन योर पासवर्ड्स नहीं लगाइए पासवर्ड्स में, क्योंकि ये सब हमने ऑलरेडी फिल किया होता है बहुत सारी वेबसाइट्स के ऊपर. डू नॉट यूज अ पासवर्ड दैट इज इजी टू गेस. आपका निकनेम है, चॉकलेट का नाम है, आपका फेवरेट फूड क्या है, आपका फेवरेट स्पोर्ट्स पर्सन कौन सा है, आपकी फेवरेट स्पोर्ट्स कौन सी है, मे बी 1 2 3 4 5 6 7 8 यूजली हम ये लिख दें या उल्टा करके लिख दें, तो इट शुड नॉट हैपन, राइट? सो नाउ डोंट शेयर योर पासवर्ड विद एनीवन अदर देन योर पेरेंट और गार्डियन. Never write passwords down where someone can find them, right? Keep them safe and secure. Now, after that, you can certainly appreciate your children with these kinds of logos and badges you can give it to them. Be internet kind. It's cool to be kind. Now, इसमें क्या करना है, हमें kind कैसे होना है? Treat others as you like to be treated. वो हम वैसे भी वैल्यूज में पढ़ाते हैं बच्चों को, ठीक है? जैसा हम दूसरों से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो हमसे ट्रीट करे, वैसा ही तो हम उनके साथ ट्रीट करेंगे, राइट? आप चाहोगे आपके साथ कोई ऑनलाइन स्कैम हो जाए, ऑनलाइन फिशिंग हो जाए, आपके साथ ऑनलाइन कोई फ्रॉड हो जाए? नहीं चाहते हैं ना, सो फिर हम दूसरों के साथ क्यों ऐसा करेंगे? यूज द एम्पलीफाइंग पावर ऑफ इंटरनेट टू स्प्रेड पॉजिटिविटी. पॉजिटिविटी स्प्रेड करें.
ब्लॉक करिए उन लोगों को जो आपको लगता है कि इन अप्रोप्रिएट बिहेवियर दिखा रहे हैं, दे आर मीन, एंड स्पीक अप अगेंस्ट बुलिंग एंड रिपोर्ट व्हाट्सएप पर कोई आपको फालतू का मैसेज भेजता है, आपको प्रॉब्लम क्रिएट करता है, ऑप्शन आते हैं ना, ब्लॉक एंड रिपोर्ट, क्लिक ऑन ब्लॉक एंड रिपोर्ट, राइट? सो लाइक दैट फेसबुक पर भी है, अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी है। मेक श्योर अगर आपको कोई आपके साथ बुलिंग कर रहा है, यू रिपोर्ट, राइट? लेट्स मेक the internet a kinder place. Be an internet upstander. Learn how to share kindness, block the bullies, and report troublemaker. The internet is a powerful amplifier that can be used to spread positivity or negativity. देखो, negativity, positivity बहुत जल्दी फैलती है, सोशल मीडिया है हमारे पास, पर इसमें प्लीज ऐसा नहीं सोचें कि बदनाम होंगे तो क्या नाम ना होगा। मतलब यूजली कहावत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेट अस स्प्रेड पॉजिटिविटी, पॉजिटिव थॉट्स ओनली, एंड यू हैव द पावर टू हेल्प पीपल। देखिए कितने लोगों की आप बात को दूसरों तक स्प्रेड कर सकते हैं। किसी का कई बार कुछ नुकसान हो जाता है, कोई लॉस्ट एंड फाउंड वाली चीज है, आप उसको कैसे स्प्रेड करके उस पर्सन को उसकी खोई हुई चीज भी दिला सकते हैं विद अ लिटिल काइंडनेस। anyone can make a huge difference in turning bad situations around. Messages sent via chat, text can be interpreted differently than they would in person over phone. मैं फोन पर किसी से बात कर रही हूँ, मेरी टोन से, मैं सामने इन पर्सन बात कर रही हूँ, मेरी टोन से अकॉर्डिंगली अगला पर्सन, सुनने वाला बंदा समझ जाता है कि व्हाट आई वांट टू से। वही चीज मैंने लिख कर भेजी है, तो उसमें अगले पर्सन को, देख पढ़ने वाले को हो सकता है मेरी टोन समझना है, तो फिर उस चीज के लिए वी हैव टू बी वेरी वेरी काइंड। हो सकता है हमने कुछ और लिखा है, अदर पर्सन इज इंटरप्रेटिंग अदर थिंग, कॉमा की मिस्टेक्स तो हम करते रहते हैं, वी डू नॉट नो वेयर टू पुट द पॉजेस एंड ऑल, अदरवाइज ऑल्सो द लैंग्वेज, द वर्ड्स दैट वी चूज accordingly it may happen. Now, so if you are unsure what the other person meant, find out by talking with them in person or on the phone, right? So this is really very important. Now, goals for the students: define what being positive means and look like online and offline. Lead with positivity in online communications. Identify situations in which a trusted adult should be consulted. ऐसी सिचुएशन के बारे में बच्चों से बात करिए कि कौन कौन सी सिचुएशन में उनको अपने पेरेंट्स से, बड़े से, एल्डर से, टीचर से बात करनी चाहिए। पॉजिटिव कम्युनिकेशन ही हमेशा फॉलो करना चाहिए, राइट? सो आप उनसे, बच्चों से डिस्कस करेंगे, ये हमारे गोल्स हैं। एंड लेसन फ्लो, गोल्स फॉर स्टूडेंट्स, एंड लेट्स टॉक, एक्टिविटी, टेक अवे। नाउ सिनेरियो, people are leaving disrespectful comments on a selfie your friend posted. पोस्ट किया, उसके ऊपर ऐसे कमेंट आ रहे हैं। One way I can show kindness is to, and another way is to, बच्चों से डिस्कस करिए अगर ऐसी सिचुएशन है उसमें आप क्या करेंगे, right? So how we can react, talk to the students, right? And now module number 5, be internet brave. When in doubt, talk it out. Be internet brave. Encourage brave behavior online and help prevent bullying. Brave का मतलब, भाई हम वो इस वर्ड लेके थोड़ा ना चले जाएंगे। ब्रेव मीन्स लाइक यू, फर्स्ट ऑफ ऑल यू आर ऑनेस्ट, बी ऑनेस्ट एंड बी ब्रेव। ब्रेव कैसे होना, कोई चीज को, अहिंसा को एक्सेप्ट नहीं करना है, राइट? और आपके, अहिंसा नहीं, सॉरी, हिंसा को एक्सेप्ट नहीं करना है। अगर आपके साथ कोई बुलिंग कर रहा है तो मेक श्योर यू रिवर्ट अकॉर्डिंगली। बुलिंग को एक्सेप्ट नहीं करना है। स्पीक अप when you notice inappropriate behavior. Stand up when you see something you are not comfortable with. Report when you witness people being treated poorly online. Report it, report it, report it. Never hesitate to ask for help from someone you trust. It may not always seem like, but being able to ask for help when you are not sure what to do is a brave thing to do. Bravery is about taking risks to help people. दूसरों की हेल्प करनी है, दूसरों की आवाज बनना है, राइट? सो अपने लिए भी, दूसरों के लिए भी, make sure you support them. Now, goals for the student: they should be able to understand what types of situations call for getting help or talking things out with a trusted adult. Consider what options there are for being brave and why bringing adults into conversation is important. बच्चों से बात करने की क्यों जरूरत है बड़ों को उन चीजों में लेकर आने के लिए? This is really very important. आप बच्चों को बताइए, it is really very very important because we need to ask. We cannot always assume, right? So
ऐसे पोस्ट-इट में आप डिस्प्ले बोर्ड बना सकते हैं. You may ask your students to go for it, share the same. And then celebration of learning, whole school, whole class celebrations. Don't wait for the cyber week because security privacy is a paramount at all the times. हमेशा साल में एक बार साइबर सेफ्टी जब वीक आएगा उसी दिन हमने साइबर सेफ्टी की बात नहीं करनी है. हमेशा यूज करते हैं तो हमेशा ही उसके लिए वी हैव टू बी वेरी वेरी अटेंटिव. अपॉइंट अ साइबर सेफ्टी कैप्टन इन योर स्कूल. एक साइबर सेफ्टी सेल बनाइए, स्टूडेंट्स कैप्टन बनाइए, उसमें टीचर्स होने चाहिए. आपके मेल एंड फीमेल टीचर्स, मेल एंड फीमेल बॉयज एंड गर्ल्स इज वेल. सो अकॉर्डिंगली यू हैव टू मेक अ टीम एंड मेक श्योर आप उनको टाइमली उनकी वर्कशॉप्स करवाइए, right? And they will be able to organize sessions for the other students as well. Ensure online protocols are integrated across the subject areas as students go online for research. Research project हम सब students को देते हैं almost in all the subjects, right? Flipped learning की बात करते हैं, blended learning की बात करते हैं, तो make sure you talk to your students related to this and organize sessions for the students to teach parents about cyber safety during PTMs, annual fairs, any gathering. Encourage role plays during assemblies. Assembly को एक अच्छा सा बनाइए कि अपनी डेली जो एक्टिविटीज है उसके साथ आप रिलेट करिए. I mean, this is what you can do, but you can do much more than that also. Stop, block, and tell. Stop cyberbullying now. Block if you know how. Tell an adult it's not hard. We don't want you to be scared. Stop, block, and tell. If cyberbullies try to bring you down, be on guard and stand your ground. Bullies should think before they type. If they don't stop, make things right. Stop, block, and tell. It's time to stop and be on top. Don't be scared. It's time to be heard. If you are tempted to write something mean, think how you could hurt a child or a teen. Stop, block, and tell. Put down your phone or tablet. You are not alone. It's time to share your feelings and try to start the healing. Stop, block, and tell. Stop cyberbullying now. Block if you know how. Tell an adult it's not hard. We don't want you to be scared. Stop, block, and tell. Stop, don't reply, but don't take a screenshot. Block the sender. Tell an adult you trust, right? So make sure you talk to your students and conduct such kinds of activities in your classes. Spread this with your children, and in the next video we shall be talking about the different modules को आगे करने के लिए क्या क्या activities हैं. We'll be talking about that also. And my lovely educators, I will be sharing with you the link also. After I will be sharing number of modules too. अगर आप अपनी कम्युनिटी में, अपने सर्कल में 20 और टीचर्स को इस चीज के लिए एनकरेज करते हैं, उनका सेशन लेते हैं, देन यू विल बी गिवन अ सर्टिफिकेट फॉर दैट. और अगर आप एज पर सीबीएसई अगर आप 100 स्टूडेंट्स में ये अवेयरनेस क्रिएट करते हैं, देन अ फॉर्म विल बी गिवन टू यू एंड देन मेक श्योर you fill in the form and you will be given certificate for the same. But हर चीज हम ठीक है सर्टिफिकेट के लिए तो नहीं भी करते हैं, सीखते हैं. जरूरी नहीं है कि हम इंटरनेट पर कितनी वीडियोस देखते हैं हर चीज हम सर्टिफिकेट के लिए ही करें. पर बच्चों में बच्चे हमारे पास आते हैं, दे आर द फ्यूचर. हम उनको पढ़ा रहे हैं. It's our responsibility to keep them safe online, to teach them such kinds of etiquettes. Make sure you teach such things with your students so that you all will become internet awesome students as well as teachers. So my lovely educators, if you really like my initiative of sharing such information with you, do subscribe to the channel, hit the like button, and share your valuable feedback in the comment section below. And do give me suggestions what kind of videos you would like to see on my channel. Thank you all of you. Have a nice day. See you again.